Like Pune, the havoc of speeding is visible in Noida too. A speeding Audi car hit an elderly man who was going to collect milk near the Kanchenjunga apartment in Sector 53 in Noida. And the collision was so strong that the elderly man jumped several feet and fell down and died. The car driver fled from the spot, and the incident has been captured on CCTV, and police have registered a case against the unknown white vehicle on the basis of the complaint in this matter. But this unfortunate incident actually took place in the morning when 63-year-old Janak Dev Shah, who has retired from the All India Radio, had actually gone to deliver milk in the morning, and when he was passing on the road, a speeding Audi car hit him. Tanushka has further details. I have with me the son of the deceased, संदीप जी. आपको कब पता चला कि आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है? जी, अराउंड 6 o'clock हो रहा था. मेरे नेबर वो वॉक कर रहे थे रास्ते में, तो वो उन्होंने आके मुझे बताया. मैं जस्ट घर से निकल ही रहा था उस टाइम, मैं भी वॉक के लिए. तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी का वहाँ एक्सीडेंट हो गया. तो मैं घटनास्थल पे तुरंत पहुँचा. तब तक वहाँ से PCR 112 नंबर की वो मेरे पिताजी को हॉस्पिटल लेके जा चुकी थी. तो फिर हमने सेक्टर 24 वहाँ पहुँचे. वहाँ से पता लगा कि उन्होंने 34 मानस हॉस्पिटल लेके गए हैं. फिर मैं वहाँ पहुँचा तो फिर वहाँ मैंने ये देखा कि ये वो नहीं है जी. और उसके बाद फिर पुलिस ने कंप्लेन कब दर्ज कराई? पुलिस से हम वहाँ पे गए FIR के लिए. उन्होंने कहा कि पहले आप इनका पंचनामा कराओ, पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद हम आपका FIR लिखेंगे. फिर हमने पंचनामा भी किया, सूरजपुर भी गए. वहाँ से फिर यहाँ सेक्टर 39 भी गए हम लोग. वहाँ से फिर हमने इनका पोस्टमार्टम कराया. उसके बाद सारा रिपोर्ट ले जाके हमने वहाँ दिया. सेक्टर 24 में एक एप्लीकेशन लिखा, फिर उन्होंने हमारी FIR करी. Like Pune, speed was seen wreaking havoc in Noida, Sector 53. On this service lane, on Sunday morning, 63-year-old Janak Dev Shah was hit by a speeding white-colored Audi vehicle that came from that side of the service lane, and it hit the elderly man so hardly that he was tossed in the air for several few feet, and when he landed on the spot in this road, on the road, he died on the spot. This elderly man is a retired employee of Akashvani, and he lived in a nearby colony in Noida. And what we know right now is that a case has been registered by the police under sections for unknown persons and the unidentified vehicle. Police have not made any arrests in the case yet. This is really gruesome. The family members of the elderly man had no clue what has happened. They were concerned after Janak Dev Shah did not return home for a while. So they came and searched for him in around this area as he had left in the morning to collect milk. They knew that this is the place where Janak Dev Shah comes to collect milk, and then they saw their family member dead on this road. This is what we have right now for you, and police investigation is underway, and police have formed teams to nab the accused. वहाँ से जैसे आज तेज गाड़ी सर्विस रोड से चली और 10 फुट ऊंचा उठाया, ऊपर उठा के एकदम गिरे तो ऐसे खत्म हो गए. उनकी डोलची वोलची वहीं गिर गए. और पुलिस. आपने कहाँ से देखा ये सब? वहाँ से सर्विस रोड से आ रहे थे वो. नहीं, आप कहाँ थे जब आप? यहीं थे, हमारे सामने हुआ एक्सीडेंट. और जनक देव शाह रोज सुबह को दूध डेली दूध लेने आते थे डोलची में, खुला दूध लेके जाते थे, और पुलिस वाले फिर वो लेके चले गए. और ये जो गाड़ी आ रही थी किस रफ्तार से आ रही थी? वो कम से कम 120 की रफ्तार होगी. इतनी तेज, और फिर इतना तेज लेते गया, वो धुआं सा फेंकते गया, वो दिखाई नहीं दिया. और कोई होता बहुत सारे मर जाते इतना तेज. Thank you. So that's what we heard right now from an eyewitness. This is key to the case here. He has his stall right here, which is opposite the service roads. He has a clear view of the accident. He says that the car came with such force and such intense speed that the elderly man was flung across several feet in the air until he finally dropped dead on the road.